गुड मॉर्निंग सभी भैया दीदी का स्वागत है अपने लाइव में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हमारे लाइव से जुड़ेंगे। अच्छा लगेगा आप सभी को।
स्वागत है सभी भाई बहनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रमोद भैया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
कोई बात नहीं शिव शक्ति, आज मैं 2 मोबाइल से आपको दे दूंगी, 2 मोबाइल से आप दे दूंगी, ठीक है। 2 मोबाइल से आपको आज मैं दे दूंगी, नहीं आ पाई। ओके सिस्टर, आज मैं दे दूंगी दोनों मोबाइल से आपको।
थैंक यू। सभी भाई बहन चले गए, भाई बहन हमारे सब चले गए।
आज 18 है 19 है 18 मोठा को बना दिया ना परसों। हाँ मैं टिकटों का आ गया आज मेरे को का पैसे तो ऐसा दूसरी तक कॉल मार दे टिकट हुआ केका का रहो क्या काटे मोठा निकल बनाते दे परसों के बाबू हाँ बताएंगे आपका कल भी कल लेते जाते 20 बना दे तो लोग आए सकाई पूरा साड़ियाँ अच्छा साड़ी बना दो क्या है साड़ी जाता है साड़ी तीन टाइम बाहर से चला गया कहाँ पे तो वजन तक दूसरा फूल पड़ा है सकाई पूरा खाए थी जल्दी पूरा खाए बताओ रहे रहो अभी सकाई पूरा जाई फिर पूरा जाई फिर पुरानी जाई फिर ब्रेक खा संगत जा 8 बजे फिर आवा तो होता है तो साथ चलाओ खर्च के होगा चाहिए अम्मा ना रहा था जिम्मेदारी बाबू के ऊपर रहा था जब अम्मा ना रहा था तो बाबू के ऊपर जिम्मेदारी पूरी रहा था घर रखा हुआ वो कहे बाबू अम्मा चली गए हैं माइक वगैरह कटा लगाए लड़ते जाते हमें 10 बजे रहा पहले 10 बजे खाता अबे रुक जावे ना खाए हम खाए लगे देबो ना कि तक खाई अम्मा ना यहाँ तो बैठी रही खाओ तो हम अपन खाए लगे बैठ जाए तो देवे ना करब फिर अच्छा लगे खाए लें शांति से एकदम चीख रहे तो फिर खावे नहीं करें तो आधा घंटा बाद हम वहाँ जाए नौकरी बोले लगे तो उठते ही उठत हो जाए इंसान देखिए बाजी पता नहीं कहाँ जा रही है खाती को लगा करे दाई की दाई वहाँ जाते सो जाते फिर खवा बस जाकर खाए के लिए वो करते कहीं ना खतरा वहाँ से सब खबर आ गई जैसे मछली छड़ी बन जाए ना वो चीख रहे एकदम तो कहीं अभी रुक जाए ना खाओ अभी का रुक जाए 10 बजे की बनत अब रुका तो फिर भी इंसारा ही हो जाए फिर खाए के बाद ही होता रहा तो जिन खा खरी ना चल बार दिन खावे ना कर ना ये जब तक कमी ना रही ना टड़ी पक्का नहीं देखे तभी कर अरे भले मत चली अम्मा भले चली ये कर आधा दिन हो जा रही और कर रहे हैं को दिन क्या कहीं में लगा रहे कहूँ गार्डन 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 कहा बदलाएंगे अभी जैसे कि नहीं बतलाने ना मतलब पाही पूरा हाँ यहाँ कर धुआं रही हूँ कहीं हाँ यही बात है ना बहन मुँह करे पहले तो कहीं मुँह है यही करे पता लग जाऊंगा हाँ फिर वो क्यों ना पता वो क्यों खाई जो बस वो क्यों होने बतलाए के बस हुआ और सही है लम्बा ना जे जो है के पहले बुद्धा है तो मगर वहाँ करे रहे पंकज जमीन है बतलाने दिया था कहीं कहीं मसाला पीसा कहीं उसने मसाला पीसा कहीं कहीं पंकज में कहीं मसाला ये पंकज बड़े निकल मसलाने सभी की हाल चाल नहीं पंचर वाली कहीं ना पंचर बतलाए कहाँ कहीं बतलाए कौन मसलों है की कहीं उनका नहीं पता है ये लड़कियां से कुछ कुछ बताइए कौन निकलवाएं चुप कैसे जाए कैसे छुट्टी पाई गाड़ी जब से गाड़ी बड़ी जान लग कितना बार गाड़ी दीदी पंकज गाड़ी निकलवाए
क्या बात है? पंकज का गाड़ी निकलवाई। अच्छा पंकज जी का हम सोचे वो जो सिवनिया के दे वाला उसके तो पदरो देखत रहे कहा था पंकज उसका जो हम जाने सिवानी वाली जो करवाया भैया लगाए नहीं हाँ अपन कहा बात अपना निकलवाए हाँ वही कहाँ निकलवाए हैं। सर सोचो सिवानी देख बातें हुई अंतर आज निकलवा लें भी हम लोग पैसा पहिए तो पहिए कैसे उड़ाएं 1 साल 2 साल ब्याह कर तो ही जाए 2 साल ना नहीं दिया है गाड़ी ना नहीं दूसरे कुछ नहीं। हाँ कहीं में गाड़ी है तो पैसा देगा अरे पवन में बात चलाए लाई ले तो छोड़ दे थोड़े दिन चलो निकलवा रहे हैं और चलाइए कुछ दिन अपने लोग का पंखा चलाइए फिर पुरान हो जाए भाई चलाइए पंकज चम्मू क्या लेगी क्या क्या कह तुम्हें पंखा चलाइए हमसे कहा जाता कोई हो जाए कहा कहा कहीं करा लेगी हाँ कुछ दिन भर भी चलाई लेगी तो चलाइए ना जब बाइक में जब लग जाएंगे तो पीछे में बैठ के चलिए। शिवानी वाले पे ही पड़ी हुई देखा वो घर पार्टी आए तो देखो कब आवा करवाओ पैसे से कहोगे तो हमें बताइए कम किस्तें पे हैं हम धीरे धीरे जैसे कर्जे भरा तो वैसे वो भरा फल करते हैं। किस्त पड़ेगा नमो हमका ना बताएं और गलती नहीं करवा रहे नाम ना वही ये जो गुल्लू निकलवाया हूँ उनके बाद कौन गलती थी ना बाप कहा था नाम ना बताएंगे हमारे ना यार कुछ बहुत बताएंगे वही ये जो गुल्लू ले हैं हम स्प्लेंडर प्लस हीरो के कितने 95,000 खोए किस्तें कहेंगे किस्त बहुत देख ला ये ठीक है बार ये चलाओ अपने गाड़ी का करवाओ क्या बोल रहा है तुरंत रही थी ना तुरंत नहीं रही थी ना टाइम कहूँ आवे जाए तो वही जब ले रहे हैं तब उनका ले जा रहा है नहीं फिर टायर वगैरह बोलना पावर अरे ठीक है रखा चाहिए ठीक है हेलो ज्यादा बुखार ये बोल रहा हूँ का ठीक है ठीक हाँ शिव बहादुर भैया 1 हफ्ता बाद लाइव में आए हो ऐसा क्यों
खुद करोगे? हेलो हाँ। अरे वजीरा आवत रही प्रधान मेरे खोलो बाटन आज मीटिंग क्यों नहीं कराई मीटिंग और मीटिंग ला हेलो हाँ कहाँ? काहे मीटिंग कराया कीजिए ठीक है। आज ये नंबर पे चल जाए दरवाजे में हम्म। कुछ हो जाए ना भाई हो जाए मीटिंग अन्ना होए तो हाँ अन्ना होए तो पूरा होए तो काम बताई ना होए तुम बैठ के आओ। जैसे टिकट टीटी मिले तुरंत टिकट बनवाओगे तो टिकट हमारा बनावा। अरे सौ 100 सिस्टर रहेगी बस। हाँ वो कोशिश करेगा कि कोई जाए हाँ तो हो गई करे। हम्म। चलो ठीक है। ठीक काम कर हो गया टिकट। हाँ शिव बहादुर बताएंगे ज़रूर कि मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ। शिकवा शिकायत नहीं है, बस यही पूछ लिया कि कोई दिक्कत थी क्या। कोई दिक्कत वो भी हो सकती है।
संडे पीस ले। नहीं पीसा है एक कटोरी रही। हाँ? एक कटोरी पीसा रहा। जो डेली लगा तो वो तो लागे उससे कम लागे ना ज्यादा लगा तो कम उससे जो और लाइट आ जाए पीस उठेंगे। इसलिए पीसा लग जाएगा बताओ। संजय पीस तो नहीं देगा चटनिया संजय के पीछे रहे अदरक बना रहा हूँ जो कहा तो पीस दे हो अब भियान सोचब ना कि आवत ना लाइट हम तो सोचे एक है मैं गए खरीद ले एक सब चीज मिला के पीस दे इतना नहीं जाना रहे ना वो उबे न करे हम तो सोचे दिन बिगड़ी गया तो संजय चटनी पीस रहे वो वैसे गया
थैंक यू कुछ दी, थैंक यू सभी भाई बहन। कल 2 बजे से आए तो कटबा ही ना आज भाई मैंने अब नहीं देती नहीं है कि दे दे कौन नहीं है अब भाई खावा चला बहुत गर्मी है। उन्होंने के विषय से खरीदे क्या का खरीदबे हाँ? जीवन कॉपी किताब का पूरा फिटिंग करबे समझ जाते हैं, उसमें तो रोज कहीं 20 रुपये दे 40 रुपये दे हिंदी के विषय बनाओ अंग्रेजी के विषय बनाओ एक बुक ही होगा इसका। जितनी गर्मी रहे ना गर्म रहे गरम रहे ना ये गरम रहे लाइट ये गर्मी में परेशान करे ना ज़्यादा
थैंक यू कुसुम दीदी, थैंक यू, राधे राधे। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय कुसुम दीदी, बाय बाय। थैंक यू सभी भाई बहनों को, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू शिव बहादुर भैया, थैंक यू, राधे राधे। सभी भाई बहनों को थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू सभी को, राधे राधे।
सुनीता दीदी आओ खा लो खीरा। खा लो। मगो ना तो ना। थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू, बाय बाय। सीमा लवा ना ले गन का ढेर लाए हैं काला करे। आज ना पहले हैं। आज दिन ढेर काम हो जाए, 2 बजे से काम बहुत कपड़ा धो गया। आज छुट्टी पर आ जाए तो
रहे हैं देखो नीचे पानी में इतना देर लगा 1 बज गया खा ले जो ये एक लगते पानी ना थोड़ा बना ले तो बने ना
थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू। जो भी भाई हमारी लाइव में हैं सभी भाई बहनों को थैंक यू। कौन कौन है मेरी लाइव में जरा एक बार कमेंट तो कर दे। पूजा सिस्टर क्या कर रही है? सभी भाई बहन को राधे राधे।
बबीता दीदी स्वागत है लाइव में। राधे राधे बबीता दीदी, स्वागत है। स्वागत है बबीता दीदी, राधे राधे। थैंक यू सभी भाई बहनों को, थैंक यू, राधे राधे सभी को। खाए लगता ना, खा दे क्यों ना खाए। थैंक यू बबीता दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गर्मी बहुत तगड़ा है मेरे यहाँ दीदी। आप सबके यहाँ गर्मी कैसी है? अब यहाँ गर्मी पड़ने लगी, जियरा बेकरार है गर्मी से। हाय रे गर्मी, गर्मी पड़ने लगी दीदी, गर्मी पड़ने लगी। क्या मौसम आया है पूरब से मस्त, गर्मी है पड़ी। हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, गर्मी गर्मी, गर्मी में जिया बेकरार है। 24 पावर, गर्मी का जगह एक ही जैसा है बहन, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा पावर है। नहीं दीदी, मेरे यहाँ ना क्या बताऊँ, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लाइट कटी है दीदी। सुबह 6:30 बजे से लाइट कटी है। 5 मिनट के लिए आई थी, 10 मिनट के लिए, तो जल्दी से बोर भरे, मतलब पानी भरे, टंकी खाली थी, सुबह से खाली हो गई थी टंकी, तो टंकी भरे, जैसे बोर बंद किए वैसे लाइट भी चली गई। अब जान लीजिए तब से अभी तक लाइट आई नहीं है। अब गर्मी में इतना दुकान का सामान बनाना होता है ना, अभी जाके बना के आई, वे खाना नहीं खाई हूँ, चल रही हूँ खाना खाने। उसी में गर्मी हो जाता है, दुकान का उसी में सामान बनाना रहता है, दिमाग ख़राब रहता है, एकदम गर्म रहता है दिमाग, जान लीजिए। अरे राम रे, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाय रे पूजा सिस्टर, हमारे यहाँ यही दिक्कत, लाइट ही नहीं रहती है गांव में। अब गर्मी भर ऐसा ही पावर देगा। हाँ दीदी, ऐसे गर्मी में ज़्यादा पावर काटती है। वही तो बता रहे, 6:30 बजे की लाइट कटी है, 6:30 बजे से लाइट कटी है। जैसे सुबह आँख खुली, थोड़ा काम किए, सबके लाइव में मोबाइल जोड़े हैं। सुबह से जब से उठे हैं तब से मोबाइल में, सबके लाइव में तीनों मोबाइल जुड़ी रही, समझ लीजिए। सुबह मेरे पति की भी मोबाइल रहती है, 2 अपनी है और पति की मोबाइल, तीनों मोबाइल जगह जगह जोड़ कर जैसे काम वाम करने लगे वैसे लाइट चली गई। अभी तक लाइट आई नहीं है, अब इंतज़ार है। वो लग रहा है 2 बजे आएगी, कल 2 बजे आई थी, आज भी लग रहा है 2 बजे आएगी। अब मेरी मोबाइल में जो है 25% बची है, सुबह से चलते चलते। अभी मैं 2 बजे में लाइट बंद भी कर दूँगी, अगर लाइट नहीं आई तो। आएगी तब भी 2 बजे बंद करूँगी। काहे से दीदी पता नहीं क्या हो गया मोबाइल में, आप सब में हो रहा है कि नहीं। जब से गर्मी पड़ रही ना, मोबाइल इतना हॉट हो जा रही है, एकदम गर्म है मोबाइल, मोबाइल एकदम गर्म है। गर्म की वजह से ना मेरा एक बार लाइव ऐसे कट गया, लाइव में काटी नहीं थी, सिर्फ कट गया, अपने आप कट गया। उसमें लिखा था कि आपकी मोबाइल हार्ट टेम्परेचर हो गया है। तब जाके मोबाइल थोड़ा ठंडी हुई, तब अपने आप लाइव चालू किए जैसे ना, तब आया, फिर उसी पे लाइव चालू हो गया। मतलब जहाँ से लाइव कटा था, जैसे सब लोग जुड़े थे वहीं से लाइव फिर से चालू हो गए, अपने आप चालू किए तो।
इतना गर्मी बहुत। मोबाइल भी तो चल रही। हाँ दीदी जब से उठे हैं समझ लीजिए, तब से लाइव कर आती है, अभी चलती है। ये नहीं है कि अभी सो के उठी हूँ तभी से मोबाइल पूरी रहती है, मोबाइल ये चलती है। जिसके लिए भी मैं, जिसको अपना समझा जाता है उनके लिए भी हम लगा के ऑन करके छोड़ दो ना, ऐसे लिए भी ये मोबाइल ये चलती रहती है। इसके लिए भी एकदम जब से यूट्यूब पे आए हैं मोबाइल को कचड़ा कर डाले। नई मोबाइल एकदम समझ लीजिए चार्जिंग में लगा लगा कर अभी मोबाइल इतनी गर्म है, जान लीजिए कि फिर हो सकता लाइव कट अपने आप। गर्मी में, ठंडी में नहीं गर्म होती थी बहुत मोबाइल, गर्मी में कट रही है। गर्मी में जो है ना गर्म हो रही है मोबाइल, ठंडी में 24 घंटा ऑन करके रखे रहते थे, बिल्कुल गर्म नहीं होती थी। अभी टेम्परेचर इसका जान लीजिए गर्म ही दिख रहा है, जहाँ छू रहा है ना एकदम गरम गरम मोबाइल। हम सो जाते हैं लेकिन जिससे जिसके लिए भी हम लगा दो ना चली चलती ही पड़ी रह जाती है। अगर 10-5 मिनट बाकी रहता दीदी रात में सपोर्ट करने के लिए ना, सोचो चलो 5 मिनट और हो जाए, 1 घंटा हो जाए ना, इसी चक्कर में सो जाओ तो मोबाइल ये चलती ही रह जाती है। उसका तो कोई अंत ही नहीं, जब लाइव बंद होगा तभी होगा। अरे राम रे, दिन भर काम कर रहा हूँ, रतिया की नींद ये हुआ था। तब भी हम लोग यूट्यूब पे जब पे आ गए हैं बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं मोबाइल के चक्कर में, सपोर्ट के चक्कर में। ना दिन सोते हैं ना रात को सोते हैं सही से, नहीं तो 1 घंटा दिन में सो ही जाता रहे। अब तो मोबाइल में ना किसको टाइम देना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिंदगी एकदम जान लीजिए व्यस्त हो गई है, थक गए हैं। अरे राम रे, अगर आवाज़ तेज करके सो तो फिर नींद ही नहीं आगे आएगी। अरे आवाज़ तेज करके रखूँगी कि हाँ चलो हम बताएंगे ऐड आ रहा है ना, तो यही पति भी तो हैं, कहीं दूसरे जगह थोड़ी है, यही चार्जिंग में लगी है, यही पति जी हैं। तो बिगड़ते हैं ना कि तुम लोग रात दिन रात प्यार प्यार करवाती रहती हो, राधे राधे करके, जय श्री कृष्णा करके राधे राधे दिन भर लगाए रहती हो। रतिया को भी न सुकून से सोती नहीं, सो जाना बीमार हो जाएगी। धीम कर उसको, धीम कर, तब जान लीजिए हमको आवाज़ बंद करना पड़ता है। राम रे, पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा, पूरी उमरिया बीत जाए। हे पापी मन कर ले भजन, सारी उम्र का कर ले जतन, बाद में मरे बचताए। पेड़ का आवाज बहुत तेज आता है अड़ का। हे पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा, ये उड़े जाएगा ये तेरी थी उमरिया में क्या करेगा।
हे पापी मन कर ले भजन, हे पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा, सारी उम्र ही बीते जाए। थैंक यू ऐड देखने के लिए, थैंक यू दीदी, ऐड देखने के लिए थैंक यू। हमारी किरण दीदी का स्वागत है लाइव में। ला 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 ला, सारी मेरी आई तेरे भैया, सारी मेरी आई तेरे नाम। ना कहीं तो ले लो खाई डाल और क्या ना बिलरिया ले 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 पसक ले तो हुई रहे तो मैंने नहीं कह पाए। अरे मोई एक रोटी बची रही ना समझिस कि हाँ मार दे मुखी एक समय होता है ना गलती सारी गलती है कटोरे में क्या रहे ना कौन वाला ना है वो बड़ी कटोरी में बना छुटकी में बना की बोटी हाँ ओकर ले ले दे दे मम्मी के ऊपर धो दे। थैंक यू किरण दीदी स्वागत है लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है। और बताओ किरण दीदी क्या हाल चाल है कैसी हो।
ओके दीदी, बर्तन धुल लीजिए, हम भी जा रहे हैं अब खाना खाने। अब मोमोज बना के छुट्टी पाए हैं, अब खाना खाने जा रही हूँ सिस्टर। धुल लो बर्तन वर्तन, अपना काम कर लो। ठीक है दीदी, काम करो, सभी लोग काम करो। हे पापी मैंने कर ले भजन।
आओ दीदी खाना खा लो। किरण दीदी मैं खाना खा रही हूँ, आप भी आइए। बबीता दीदी आप भी आइए। दुकान का बना लिए अब खाना खा लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर बनाएंगे मोमोज। घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दीदी, बहुत थक जा रहे हैं काम कर करके। उसी में गर्मी पड़ने लगी है, और फिर मेरी सासू माँ चली गई हैं मायके, सासू जी चली गई हैं मायके। उनकी भतीजनी का शादी है ना, वहीं चली गई है। अब गाय वाय का काम भी करना पड़ता है, गाय का पानी देना है, चारा देना है, गोबर है, टाइम टाइम से सब कुछ देखना पड़ रहा है। रहती थी तो अपना काम करती थी। बहुत काम हो रहा है दीदी। खटर खुटर यहाँ सारे तो परिया लगाई ना, कहीं तनिक बोलर जाई। नन्नू बहुत मार मार के तो तुम्हारे बोलर जात जाया। खट खट लाए हैं, अब भाई दूर हुए 5-6 बजे तो खेले। हम गर्मा आए, हम खटर खटर लगाए रही सब, बैठे ही ना 1 मिनट के। चलो लगा आधा घंटा के संजक भी उसी छाई ले, क्योंकि पानी लेके पौरुख ना रहे। हाँ दीदी हमारा टाइम हो जाता है, दुकान के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। लेकिन दीदी सुबह नाश्ता किए रहते हैं ना, नहीं तो इतनी टाइम तक हम कैसे रहेंगे ना। सुबह बच्चों के लिए चाय पराठा बनाते हैं। बच्चों का रहता है, स्कूल रहता है, टिफिन रहता है, तो बच्चों के लिए चाय पराठा बनाते हैं, तो वही चाय पराठा हम भी खा लेते हैं। इसके वजह से इतनी टाइम तक रुक जाते हैं, नहीं तो भूख बहुत कष्ट लग जाती। इतने टाइम तक हम रहेंगे कैसे, काम ही न कर पाएंगे। हम 11 बजे से मोमोज बनाना शुरू कर देते हैं। 11 बजे से 11 बजे के पहले भूख नहीं लगी रहती है, नाश्ता चाय पराठा खाए रहते हैं। 10 बजे भूख नहीं लगी थी, 11 बजे से जब बनाना शुरू कर देते हैं फिर उठना नहीं है। फिर 11 बजे से मोमोज बनाना, फिर उठे नहीं, अभी उठे हैं, बंद किए हैं, तब खाना सभी लोग खा रहे हैं। आप भी जाने वाली हैं शिव भैया की शादी में? निमंत्रण मिला है दीदी, अब कह नहीं सकते हैं कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। व्हाट्सएप पे निमंत्रण आया है, क्लियर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे देवर जी जब तैयार होंगे दूरी सफर के लिए तभी जा पाएंगे ना। अभी इसी समय दुकान का ज़्यादा भीड़ भाड़ चलेगा, दुकान का काम चल रहा है, इसी में निमंत्रण ज़्यादा आ गया है। 1 हफ्ते में समझ लीजिए
हमारे घर हमको 5 शादी में जाना है, समझ लीजिए 5 शादी में जाना है 30 तक। 30 के बाद 2 शादी रह जाएगी। एक शिव बहादुर का न्योता 30 के बाद है, मतलब 5 उस तारीख को उनका है। एक और है लखनऊ का, मतलब बहुत दूर उसको भी है। दूर दूर जाने के लिए ना टाइम होना चाहिए 4 दिन के। जब तैयार होंगे अपने मन से नहीं कह सकती मैं। नज़दीक नहीं है कि हम अकेले चले जाएंगे। जब लगन का समय आता है दीदी ना, तभी दुकान चलती है। जब शादी विवाह का समय आता है ना, तो उसी दिन दुकान भी चलने लगती है। दुकान ज़्यादा दिन का बंद हो जाती है ना, दिक्कत हो जाती है। 1 हफ्ता जान लीजिए मेरी दुकान बंद रहेगी इसी में। 5 शादी लगातार है। जब हम लोग बनाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे दुकान खुलेगी। अब सासू जी या देखो चली गए हैं, परसों गई हो ना, 3 दिन उनको गए हो गया है। अब वो आएंगे समझ लीजिए 25 तक आएंगे सासू जी। 25 या हाँ 25 तक जरूर आएंगे। काहे से कि 22 की बारात है, 23 का विदाई रहेगी, 24 के मान लग गोबर पूजा उजा रहा था, ओकरे बाद ही वही आई हैं 25 के आई हैं। उधर वो आएंगे 25 का, उधर मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं चली आऊंगी। मैं विदाई होके जैसे रात को जाऊंगी, विदाई होगी तो मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे जाना है दूसरे जगह। हाँ सही बात है दीदी, काम धंधे वाले लोग समय नहीं मिल पाता है। वही दीदी सही बात, दूर का रास्ता। हमारे घर से उनका घर दूर पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ से ना ट्रेन से जाना पड़ेगा रायबरेली, उनका घर दूर है। तो दूर के लिए ना जब राजी होंगे 2 दिन का टाइम निकालेंगे, मैं नहीं रहूँगी तो दुकान बंद हो जाएगी जान लीजिए। क्योंकि मेरी देवरानी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी ना दुकान का, उसका डिलीवरी है तो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी।
हाँ सुनीता दीदी तो हमको भी कह रही है कि मैं आऊँगी, आपके घर आऊँगी, फिर आपको लेके चलूँगी। देखो कैसे क्या होता है, समय आएगा तो बताएंगे, अभी क्या बताए हैं। मेरे को भी बोल रही थी कि आएंगे घर पर, तुमको लेके चलेंगे। कैसे न तैयार हुई हैं हम कि चलो ठीक है, अगर जा पाएंगे तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मेरे घर काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, उसका वो डिलीवरी वाला काम है ना, उसका अब टाइम चल रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ गांव है शिव भैया का आपके आस पास में? नहीं दीदी, मेरे आस पास में नहीं है, मेरे घर से काफ़ी ट्रेन से जाना पड़ेगा। इनसे कह रहे थे ना, बोले कि ट्रेन से जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर है। आस पास तो नहीं है, लेकिन जा मतलब फिर भी जा सकते हैं ट्रेन से। रायबरेली दीदी, रायबरेली, रायबरेली जिनका घर है। जैसे मुंबई से कहीं से आने लगो लखनऊ, लखनऊ से तो रास्ते में पड़ता है रायबरेली ना, तो रायबरेली है उनका घर। शिव भैया की शादी में जाएंगे तो मुंबई भी आना पड़ेगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही, आएंगे अब करेंगे भाई, उनके लिए ठीक है दीदी। जैसे वो लोग जेंट्स है ना, तो अगर उनको बुलाओगे तो वो आ सकते हैं भाई, उनको ट्रेन पकड़े अपना चले आए। अब हम लोगों के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है। आह, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। आएंगे जब, अगर अभी अपना कर लेंगे निमंत्रण तो आएंगे, उनका भी फर्ज बनेगा। वही तो बात है, पास में होता तो टेंशन नहीं होता, मैं भी टेंशन। तो आपकी देवरानी का भाई देखो, समय मिलेगा तो सोचने वहाँ जाना। हाँ उसका टाइम चल रहा है ना, कब उसको परेशानी हो, कब क्या कैसे ना, काम भी बढ़ जाएगा। मेरे घर में फैमिली भी आने वाली है, बाहर वाली रिश्तेदार भी आने वाले हैं, सारे 20 के आ जाए, 21 के। मेरी बड़ी ननद आ रही हैं, आना जाना सबका लगा रहेगा। जब बड़ी ननद आ जाती है तो और लोगों का भी जो यहाँ है, सबका आना जाना यहाँ लगा रहता, काम भी रहता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती ना फिर। कहेंगे हम इनके घर आए तो ये जब न्योता ही खा तो यहाँ इनका दूसरी जगह जाएंगे, पड़ ही रहा था। फिर भी सोचेंगे, देखो अगर ये तैयार हो जाएंगे तो निकालेंगे समय। भाई समस्या तो सबके पास है, कहने की बात है। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आज वीडियो बनाएंगे दीदी, 4-5 वीडियो बनाएंगे, 5-6 वीडियो बना के पूरा एकदम, मतलब 1 हफ्ते के लिए वीडियो बना के गैलरी में छोड़ेंगे, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिलेगा। 21 को मुझे जाना है निमंत्रण में, 21 को हल्दी रस्म है, 21 को जाएंगे तो 21, फिर उसके बाद 22 का बारात है लड़की के, वहाँ से लौट के आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, 2 दिन बाद फिर मुझे जाना है, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, मतलब 5 शादी करनी है 1 हफ्ते में, मुझे ही जाना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। थैंक यू बबीता दीदी, थैंक यू, थैंक यू। अपने लिए एक साड़ी लेके आई हूँ किरण दीदी। ऐड तो नहीं आ रहा, सुन रही हो कि नहीं? मेरे नैना
सावन भादा फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी हाँ बना कर रख लो शादी विवाह के टाइम। हाँ दीदी, आज सोच रहे हैं ना, जैसे घर में आ जाएंगे सब लोग, बच्चे भी बढ़ जाएंगे, हमारी बहनें बहनें आएंगे, हमारी बड़ी ननद आएंगी, छोटी ननद आएगी, उसी में लगातार शादी भी है, 4-5 शादी है, समझ लीजिए मुझे 27, हाँ 28-27 की बारात है, मैं तो लौट के आऊँगी, समझ लीजिए 28 के लौट के आऊँगी। वो इसी में बीच मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब उसकी वजह से ना काम ज़्यादा, तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी 1 हफ्ता, इसलिए सोच रहे हैं 1 हफ्ता का वीडियो आज इसीलिए लिए ना लाइव बंद करूँगी। तो आपका सपोर्ट करेंगे कि उनका कल नहीं किए थे सपोर्ट, शिव शक्ति का सपोर्ट करेंगे, दोनों मोबाइल से सबका सपोर्ट करके फिर उसके बाद ना शाम को उनको टाइम मिलेगा, एक मोबाइल लगाएंगे सुनीता दीदी के लाइव में, एक मोबाइल से या तो वीडियो बनाएंगे। अगर उसके पहले बना लिए तो देखो ठीक है, फिर लाइव अपना चालू करके रख देंगे छोटे वाले चैनल पर। और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना दीदी वहाँ 5G पकड़ता नहीं, ये दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। मैं जहाँ भी निमंत्रण जाऊँगी ना कहीं भी 5G पकड़ेगा नहीं, और मेरा नेट चलता नहीं, एक वीडियो अपलोड होते होते ना उसको लग जाता सारा दिन। तो ये मैं सोच रही हूँ कि 4-5 वीडियो अपलोड करके सब कुछ करके वैसे छोड़ दूँ, उसके बाद वहाँ जाने के बाद पब्लिक कर दूँ बस। थैंक यू किरण दीदी, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राधे राधे। जाती फिर तुम रखते कहूँ जाए फिर मोमोज ज्यादा बना। हो गया ना, चीज ज्यादा है ना। प्यार के मौसम में वही तो बात है दीदी, नेट सही चल रहा तो कहीं भी जाए अपना वीडियो बनाकर डाल दें, फ़ायदा है नेट नहीं ज़रूरत है। अरे पूछो ना दीदी, जहाँ भी मैं जाऊँगी ना कहीं भी नेट नहीं चलता, मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता, तो समझ लीजिए हमको 2 दिन में सारा वीडियो अपलोड करके सिर्फ अनलिस्टेड करके छोड़ के रख देंगे, ताकि वहाँ जाएं रिश्तेदारी में जाएं तो ना वीडियो बनाने का झंझट, ना उसमें टाइटल लिखने का झंझट, ना थंबनेल बनाने का झंझट, बस पब्लिक कर दें बस फुर्सत। और क्योंकि लाइव भी वहाँ नहीं चला पाएंगे, जब नेट नहीं चलेगा तो लाइव भी नहीं सही चल पाएगी, तो हम यही सोच रहे हैं कि बस आज आज बनाएंगे, कुछ आज मेहनत करेंगे, कुछ कल, फिर उसके बाद परसों 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 क्या है, वो 20 है ना, आज 18 बयान 19 परसों 20, तो 20 के दीदी में अच्छा आने लगा।
चाहे केतना करा सिंगार धनिया, चाहे केतना करा सिंगार धनिया, बिना पिया के सब ही बेकार धनिया, बिना पिया के सब ही बेकार धनी, हो बेकार धनिया, हो बेकार धनिया, बिना पिया के सब ही बेकार धनिया। सुनीता दीदी के यहाँ स्टूडियो वाले भैया हैं, वहाँ गई थी। सुनीता दीदी बुलाई थी, लेकिन क्या करूं दीदी, लेट हो जाता है, इसलिए मैं उनके घर नहीं जा पाई। सुनीता दीदी नाराज हो रही है। अरे इसमें नाराज वाली क्या बात है दीदी, इसमें नाराज वाली क्या बात है, कुछ नहीं है। मतलब जैसे कोई काम से और आई हो, वहाँ टाइम निकल नहीं पाता, फिर कैसे जाओगी ना। मैं भी सुन रही थी, उस दिन सुन रही थी, आपको बोल रही थी ना कि गरीब तो घर क्या आओगी, तो ऐसे कुछ बोली थी दीदी, पता नहीं यही बात बोली थी, हाँ कि हम गरीब हैं, कुछ ऐसा बोली थी। म्यूजिक पर गाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है दीदी, एक गाना बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा चला जाता। हाँ तो और क्या, सबका तान मान मिलाते मिलाते टाइम बीत जाता। अरे अपना ही वीडियो हम अकेले बनाती हूँ ना, एक बार गा लेती हूँ, सोचती हूँ अच्छा नहीं है, चलो फिर से ट्राई कर, फिर से गाओ। अरे कितना दिमाग में रखो, मैं तो लिखने का फुर्सत नहीं पाती, तुरंत गाना सुनती हूँ, फिर तुरंत उसको सोचती हूँ कि इस तरह से मैं गाना गाऊँ, फिर मैं तुरंत वही गाना गा देती हूँ दूसरी तरह से। मुझे भी तो, और मुझे लिखने का समय नहीं है, क्या करूँ। परदेसी बलमुआ नजर लागे। सुनीता दीदी तुम्हारे देवर के ऊपर एक गीत बनाई हूँ, सुनो देखो अच्छा लगता है कि नहीं। बनाई हूँ, अभी वीडियो नहीं बनाई हूँ, सिर्फ मन में गीत बना के रखी हूँ, आज वीडियो बनाऊंगी। किरण दीदी सुन रही हो ना, आपके देवर के ऊपर गीत बनाई हूँ। परदेस जब पहली दिन गई थी तो एक गाना बताए थे, जल्दी हो गया था मेरा सुल्तान सही, सुरताल सही था, जल्दी हो गया, पहला दिन गई थी तो एक गाना बनाए थे। अच्छा अच्छा, किसके पे पड़ रहा, तुम स्टूडियो वाला गाना तुम अपने लाइव तुम डाल रही हो वीडियो पर? कल हम आपका वीडियो नहीं सुने थे, कल आपका गाना नहीं देखे दीदी, कल मेरा सारा दिन लाइव चलता रह गया, इसलिए मैं नहीं सुन पाई। तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने माना पिया, मैं तेरी हो गई, मैंने एक यहीं पर नाला सोपारा में सिंगर है दीदी, वह अपनी आई थी, वह अभी आई थी, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो उनका आवाज़ और मेरा आवाज़ मिलता है जुलता है, इसलिए हमें बुलाते हैं वह लोग, मैं भी चली जाती हूँ, सोचती हूँ जाने दो अपना भी थोड़ा। हाँ ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं, चले जाया करो, ऐसे भी ठीक रहेगा। आपका पैसा नहीं लग रहा, कम से कम आपको सीखने को तो मिल रहा है कि हाँ स्टूडियो में कैसे गाया जाता है, कैसे तान मिलाया जा। हमको तो पता ही नहीं दीदी कि स्टूडियो में गाना गा पाऊँगी कि नहीं। एक दिन ये पता नहीं कैसे खुश थे, इतना दिन हो गया कभी नहीं, एक दिन खुश थे तो बोल रहे चल तुझे कहीं
स्टूडियो में गाना गवा देता हूँ। अरे हम बोले कि 1000-2000 रुपये लगेगा तब स्टूडियो में गाना बनेगा, मारो गोली। अरे बना बना आपका गाना तो सब अच्छा रहता है। क्या हुआ? शुरू हो गई लड़ाई? जो स्टूडियो वाला भैया है उन्हीं को चैनल के लिए गाना गाना था दीदी। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, पैसा भी नहीं लगता होगा, आपको समझ भी आती होगी कि कैसे गाना बनता है स्टूडियो पे। अब मुझे तो समझ में नहीं आएगी कि मैं स्टूडियो पर गाना कैसे गाऊंगी। ज़िंदगी में कभी गाने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता नहीं कि मुझे मिलेगा मौका कभी स्टूडियो में गाने का। अब कौन है लगाए पैसा तो कौन जाए गाए। अब पता नहीं वीडियो चले कि ना चले, पैसा भी चला जाए। नुकरी सकोर दो तू आवा तो ये सकोरा तू तो कैसे नहीं नहीं तो उसके बाद देखो 5 मिनट बाद कमेंट आए, फिर 5 मिनट नहीं। जो लगवा तब आया कैसे आया। थैंक यू सभी भाई बहन। कल मोबाइल के चक्कर में लड़ाई दोनों जने से भरा और फिर लेता है, सोचे है क्यों दे बना मोबाइल। चाहे सोचल सपनवा बेकार कइलू, जाके दूसरे के काहे तू प्यार कइलू, जाके दूसरे से तू काहे प्यार कइलू, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू। ड्रीम कर। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा दीदी तो मैं म्यूजिक गाना डालूंगी अपने चैनल पर, गाना ज़रूर म्यूजिक का डालूंगी। थैंक यू। गाना मैं भी सोचूंगी कि कैसे बनता है, आपसे ही आइडिया लूँगी कि म्यूजिक पे गाना कैसे बनता है। मेरे आसपास में म्यूजिक वाले कोई है नहीं, इसलिए मेरा कुछ सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तुमको मौका मिला है दीदी ना, तो तुम ज़रूर गाओ। मैं तो बोलूँगी अपना थोड़ा टाइम निकाल कर ज़रूर जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको मैं गाना बनवाऊँगी तो आप मेरे से पैसा ना लीजिए। ऐसे आप बोलना कि मैं आपके लिए भी गाना गाऊँगी तो मेरे भी चैनल पर पड़ने वाले गाने का आप पैसा ना लीजिए। किसी का टाइम फालतू नहीं है कि इतनी दूर से जाएगा ट्रेन पे, मतलब भाड़ा किराया लगा कर। उनसे ऐसे बोलना। जाके दूसरे से कहे तू प्यार कइलू, जाके दूसरे से कहे तू प्यार कइलू, हमर सोचल सपना बेकार कइलू, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू। थैंक यू बबीता दीदी दूसरे आईडी से आने के लिए। हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू, काहे दूसरे के जाके तू प्यार कइलू, काहे दूसरे से प्रीतिया लगाई रखलू, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलू। थैंक यू सभी भाई बहन। दूसरी आईडी से आने के लिए हमारी बबीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइक बढ़ाने के लिए। किरण दीदी आप भी दूसरी आईडी से लाइक कर देना।
मैं भी कर दूंगी दोनों मोबाइल से, दोनों आईडी से। हमारे सोचल सपनवा बेकार कइलू, हम ते तोहरे एड चल रहा है, हम तो तोरे लिए जिंदगी पार कइले, हम तो तोरे लिए। थैंक यू बबीता दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता दीदी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों आईडी से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। दीदी आपका लाइफ ये चलता रहा, कहते नहीं क्या कहे दीदी, इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती है, सुबह का शाम का, चाहे जब देखो तभी बोलते हैं। ये बात नहीं है कि अभी इतना काम में व्यस्तता रहती है बहन कि आईडी 2-3 रहते हुए भी ना लाइक करने का टाइम नहीं रहता कि लाओ सब में आए, सभी में कर दूँ, सबके लाइव में 2-3 आईडी से, समझ लो इतना दिमाग ख़राब रहता काम के चक्कर में। मेरे दोनों मोबाइल में 2-2 आईडी, 3-3 आईडी है, लेकिन टाइम नहीं रहता कि दोनों मोबाइल से सारे आईडी से मैं कर दूँ। बस भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती, इधर से उधर, इधर से उधर। जल्दी से आओ मोबाइल के पास, आओ कमेंट करके फिर भाग जाओ, जल्दी से आओ मोबाइल के पास, 1-2 कमेंट करो फिर भाग जाओ। ऐसे ऐसे जान लगे दिमाग ख़राब रहा था। आराम नहीं है ना, काम धंधा के चक्कर में गृहस्थी इतनी लंबी होती है, फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली है दीदी। जैसे देश परदेश में जो लोग रहते हैं, जिसका एकल परिवार है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं वो रहता है, चलो अपना काम करेंगे, जब मर्जी करेगा कर लेंगे। अब जैसे हम लोग गांव में हैं, जॉइंट फैमिली है, तो काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, दिमाग ख़राब रहता है। मेरे सोचल सपनवा बेकार कइलो, जाके दूसरे से तो प्यार कइलो, जाके दूसरे से तो प्यार कइलो, हमर सोचल सपनवा बेकार कइलो। हम तो रुपया कमाई तोरे बिना ना, रात दिन में ना रे तोरे खातिर धना, हमर सोचल सपना बेकार कइलो। हम तो रुपया कमाई धना तोरे खातिर, हम तो रुपया कमाई धना तोरे खातिर, हमर मेहनत तू कइलू बेकार धनिया, हमर मेहनत तू कइलू बेकार धनिया, हमर सोचल सपना बेकार कइलू। नाही हमके मायो नाही याद कइलू, नहीं हमरा के चाहो नहीं याद कइलू, हमर सोचल सपना साकार कइलू। हाँ दीदी आपका लाइक मिल गया है, आपका लाइक हो गया, थैंक यू दीदी लाइक बढ़ाने के लिए, थैंक यू थैंक यू। दोनों आईडी से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू बहना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राधे राधे सभी को, राधे राधे। हो गए लड्डू 5 मिनट।
प्यार भरल दिलदार चाहिए हमको, चाहिए न कछु मेरे यार सतिया रे ना तू झुमका तू पैरो नहीं हर दुनिया मर सोचल रात दिन मेहनत करके रुपया कमाइला, रुपया कमाइला। हम तो तोरे बिना लाए हार झुमका, ना तू हर पैरो ना चूड़ी कंगन ले आए सिंगार लाए, चूड़ी कंगन ले आए गले हार ले आए, ना तू हर ना तू हर सोचल सपना बेकार कैलो। मोह नींद आवत है, बतिये करत करत मुहाई लगत है। और सोचल सपना सोचल। ओके दीदी, ओके दीदी, ओके ओके किरण दीदी, ओके ओके बाय बाय। हम भी लाइव ये बंद करेंगे दीदी, बस थोड़ा देर और ऐसे लाइव बंद करेंगे हम भी। अरे राम रे, अरे राम हो। खाना खा लो, नींद आ रही। अरे राम रे। रात दिन मेहनत के कमाई रुपया, रात दिन मेहनत के कमाई रुपया, हमर रुपया के तू बर्बाद कैलो, हमर रुपया तो बर्बाद कैलो। रात दिन मेहनत करे कमाई रुपया, हमर रुपया तो कैलो बर्बाद, हमर रुपया तो मैंने बर्बाद हमर सोचल सपना बेकार कैलो। थैंक यू सभी भाई बहनों को, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे जपा करो, राधे राधे करो, जपा करो भाई जपा करो, राधे राधे जपा करो भाई, राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, परदेस जाके परदेसिया भूले न जाना पिया, ओ परदेस जाके परदेसिया भूले न जाना पिया। तन मन है मैंने अरे पड़ गया, तन मन तुझे पे मैं तो अरे पड़ गया, परदेस जाके परदेसिया भूले न जाना पिया। चलो ठीक है, आप सब जो भी हमारे लाइव में बने हो सभी लोग बाय कर लीजिए। अब मैं अपनी लाइव से विदा ले रही हूँ।
ओके, सभी से बाय बाय। अपनी लाइफ से विदा ले रहे हैं सभी से, जो भी लाइव में है हमारे भैया दीदी सभी लोग से बाय बाय। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आप सब इतना सपोर्ट किए हमें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। राधे राधे। शाम को मिलेंगे दूसरी आईडी पर, फिर लाइव चलेगा दूसरी आईडी पर। थैंक यू आप सभी को। राधे राधे। बाय बाय सभी को। बाय बाय।